Now we'll start with gravitation. ठीक है? Okay. So the first derivation of the chapter gravitation वो कौन सा है आपका? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सिंपल है. वो कहता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू masses, that is capital M, small m, inversely proportional to the square of distance between it. So force gravitation equals gmm gm1 m2 upon r square, or rather from here we can write it as gm m by r square. और इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो फोर्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू फोर्स फ्रॉम बी टू ए. तो यहाँ पे माइनस जी एम एम ऑन आर स्क्वायर इक्वल्स जी एम एम ऑन आर. Okay. So the next derivation of this chapter, or rather this was not at all a derivation, अभी से आपका derivation start होगा, that is variation or the trend of acceleration due to gravity. अब इसका हम 3 सब पार्ट्स देखेंगे. One is acceleration due to gravity at a plane, that is straight surface. ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा? We know that force equals gmm on r square. So mg equals gmm on r square. M and m gets cancelled, so g equals gm on r square. At a height, g at a height is gm on r plus h the whole square. ठीक है? So I'm comparing these two. We get gh upon g equals gm on r plus h the whole square upon gm on r square. तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, get r plus h the whole square upon r square. ठीक है? Now इसको आप एक और तरह से भी लिख सकते हो. You can write this as r square को आप कॉमन ले लो. ठीक है? तो आपको मिलेगा 1 minus 2h upon r. This will be the reverse actually. It will be r square upon r plus h the whole square. That is equal to 1 minus r को कॉमन लेने पर क्या मिला था आपको? आपको मिला था 1 minus, or rather 1 minus 2h upon r. This is also an important result. At a depth, yeah. So g at a depth is given by gm upon r minus d the whole square. यहाँ पे मास का भी वेरिएशन होगा. ठीक है? So how do you find the variation of mass? इसको आप rather ऐसे लिख सकते हो. gmm upon r square equals, let it be capital M itself, g rho is density into volume. Volume of earth is 4 by 3 pi r cube upon r square. Square cube is cancelled, so I'll be left with, for the depth, ये जो normal हो गया ना, g normal is g rho 4 by 3 pi r square. Okay, and g for the depth is given by gm upon r minus d the whole square equals g rho 4 by 3 pi r minus h the whole cube upon r minus h. This and this gets cancelled, so I'll be left with g rho 4 by 3 pi r minus h the whole square. On comparing these two, 0, 4 by 3, 4 by 3, pi and pi gets cancelled. So I'll be left with r upon, इसका square root ले लोगे तो you get r upon r minus h.
That is the comparison of both. Or rather it will be r minus h upon r. इसको आप further simplify कर सकते हो, you can write it as 1 minus d by r. Now the next derivation is gravitational potential. Potential of anything is given by work done per mass. Okay? So gravitational potential is given by work done per mass equals gmm on r square per mass. Do one thing, write it in a different way because यहाँ पे आपका मास जो है उसको आप ऐसे लिखो gmm on r square upon mass. ठीक है? And from here mass and mass gets cancelled. So I'll be left with gm on r square. That is r. This is my gravitation potential. So the next derivation is for escape velocity. उससे पहले एक और derivation बचा हुआ है, that is gravitational potential energy. Okay, so energy potential. इसको आप कैसे लिख सकते हो? Work done equals force into displacement. Work done is dW equals force, that is gmm upon x square into dx. gmm को इंटीग्रेट करके बाहर निकालो. So I'll be left with W equals this will be gmm integration 1 by x square, that is x raised to the power minus 2 dx. Okay. So what is this going to be? gmm integrate को छोड़ दो आप इस बार. After integration I'll get x raised to the power minus 1 upon minus 1. I'll take the range from infinity to r, that is bringing the body from height infinitely away from the earth to a distance or to the radius of the earth. This is my x. Okay, so in that case it will be gmm into, this is 1 upon x infinity to r, that is gmm into 1 by infinity minus 1 by r. 1 by infinity is not defined, okay, or it is rather 0. So from that I'll get gmm into minus 1 by r, that is equal to gmm by r. This is my energy potential, also known as internal energy. That is the equation. Note it down. So the next derivation is escape velocity. Now we've been given two velocities in this chapter. एक है आपका orbital velocity और दूसरा कौन सा है आपका escape velocity. Axis नहीं मिल रहा है. I'll see 1 second. दो मिनट है, मैं एक्सेस दे रहा हूँ आप लोगों को. मिला एक्सेस? Okay, fine. So escape velocity will again consider a similar case. हमारा अर्थ इधर है. Okay, from the center is radius being r. एक बॉडी इधर है, इट्स इंफिनिटी. एक इसको हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ से at a height h to infinity. ठीक है, this was projected to infinity. So
at infinity. You are supposed to tell me energy kinetic and energy potential. बताओ. So energy kinetic equals half mv square equals 0 because यहाँ पे velocity, यहाँ पे atmosphere नहीं है. There is no atmosphere, so the body is going at a 0 velocity. Okay. इसको आप ज़्यादा ऐसे लिखो. Plus u equals u. ठीक है. Energy potential equals gmm upon infinity square, that is 0. Okay. Total energy is u. Now at h distance from the radius or at a height h, energy kinetic equals half mv square, or this will be u square because you're projecting it from that height. Okay, let me call this u naught. Okay, that will be your escape velocity. Okay, now energy potential equals gmm on r is equal to यहाँ पे h आ जाएगा, it will be gmm upon h. Total energy is given by at h. Okay, at h energy total equals half m v naught square plus gmm on r on h. So we know that the energy or the total mechanical energy is conserved. ये हमने work energy theorem में पढ़ा था. Work energy पांच चैप्टर में भी हमने इसे पढ़ा था. So using the same principle, the total energy is conserved. So ET at h is equal to ET at infinity. So what is ET at infinity? It is u, that is equal to half m. यहाँ पर भी u आएगा. Here there will be a u. Okay. Here also there will be a u plus this. Half m v naught square plus u plus gm m upon h. U and u gets cancelled, so I'll be left with half m v naught square equals g m m by h. M and m gets cancelled. So v naught is for v e लिखो, that is v escape, that is equal to under root of g m upon h into 2, जो आपका half से है. That will be my escape velocity. 2g m into h, or rather it will be r plus h if the h is significant. If the h is very very small, then it will be the radius of the earth itself. For earth, what is the escape velocity? It is 11.2 km per second. So at 11.2 km per second, आप कुछ भी यहाँ से फेंकोगे, ठीक है, आप किसी एक पत्थर को यहाँ से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पे फेंकोगे, which is totally not possible. वो अर्थ को एस्केप करके बाहर चला जाएगा. आपका ग्रेविटेशनल फील्ड को भी वो एस्केप करके बाहर चला जाएगा. Okay, that is the theory. Now the next derivation is orbital velocity. ये पता चला कैसे करते हो. h के साथ ले लो, एस्केप वेलोसिटी के लिए मैं वापस कर रहा हूँ. सो h के साथ ले लो, फिर प्लेनर सरफेस दैट इज h के साथ एंड इंफिनिटी के साथ ले लो. फाइंड द मैकेनिकल एनर्जी इन बोथ द केसेस इक्वेटेड. ठीक है, और यहाँ से आपको जो आपका प्लेनर सरफेस से आपको जो h से जो v मिला है दैट इज योर एस्केप वेलोसिटी, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग विद द ऑर्बिटल वेलोसिटी. आप अर्थ के ऊपर खड़े हो जाओ, एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाओ, ठीक है, और वहाँ पे आप खड़े हो जाओ, और वहाँ से आप कुछ भी फेंको. देयर इज टू पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटीज एक्चुअली. वी थ्रोइंग समथिंग, या तो वो अर्थ का फील्ड को एस्केप करके बाहर चला जाएगा, या वो जाके अर्थ के अंदर कोलाइड हो जाएगा लाइक दिस. या थर्ड केस इज अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, एक ऐसा वेलोसिटी आप दे दोगे जिससे वो ऐसा आके
विल गो ऑल द वे अराउंड और यहाँ पे आके वो घूमने लग जाएगा, ठीक है, यानी कि अर्थ के ऊपर वो ऑर्बिट करने लगेगा, एंड दैट ऑर्बिटिंग वेलोसिटी इज व्हाट वी कॉल द ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। हाउ डू यू स्टार्ट? आप फोर्स सेंट्रीपिटल और फोर्स ग्रेविटेशन को नोट करो। वी नो दैट फोर्स सेंट्रीपिटल इक्वल्स फोर्स ग्रेविटेशन। तो यहाँ से आपको कुछ हिंट मिल सकता है। व्हाट इज फोर्स सेंट्रीपिटल? इट इज mv square by r equals mv square by v naught square equal, that is your escape velocity on r plus h. And what is the force gravitation? Force gravitation is gmm upon r plus h. Okay, these two are equal, that is m v naught square upon r plus h equals g m upon r plus h the whole square. Square and this thing gets cancelled. यहाँ से मुझे v naught मिलेगा as under root of g m, और यहाँ से एक और m जाएगा, वो नीचे जाएगा ना, तो this and m will also get cancelled. तो मेरे पास बचेगा बस g m upon r plus h. That is my escape velocity. If you look at escape velocity, that is v equals under root of 2gm upon r plus h. Okay, and this is gm upon r plus h. So when you're comparing these two, okay, आपको क्या मिलेगा? v naught equals root 2 v, rather ve equals root 2 v naught. That is the relation between escape velocity and orbital velocity. Clear? Okay, now we'll move on to the next one, that is time period. That is time period of an orbiting satellite. एक सैटेलाइट को आप ऑर्बिट कराओगे अराउंड द अर्थ, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? इन अदर वर्ड्स, फॉर अ गिवन वेलोसिटी, अ गिवन डिस्प्लेसमेंट एंड अ गिवन एक्सेलरेशन, वो सैटेलाइट एक सेकेंड में अर्थ को कितने बार घूम कर आएगा, या एक बार अर्थ को रोटेट करने के लिए कितना टाइम लेगा? दैट इज योर टाइम पीरियड। किसको नहीं मिलता है एक्सेस? नॉट अगेन, एक सेकेंड, ये था आपका now I'll be giving you these axes. मिल रहा है? The next is time period. Okay, इसके लिए आपको स्टार्ट ऐसा करो, we know that velocity equals displacement upon time. Okay, हमारे पास है orbital velocity v naught, ठीक है, that is equal to displacement is 2 pi r because it is orbiting around the earth and earth is a sphere. Since it is a sphere, उसका जो displacement है that is given by 2 pi r, okay, upon capital T being the time period. यहाँ से मुझे t मिलेगा as 2 pi r upon v naught. And what is v naught? 2 pi r upon under root of g m upon r plus h. यहाँ पर भी r plus h आएगा। तो यहाँ से अगर मैंने इसका स्क्वायर निकाल दिया, टाइम मैंने पूरा इसको स्क्वायर कर दिया है, okay, because I need to remove the root. So for that, t square is equal to 4 pi square r plus h the whole square upon gm upon r plus h. ये term gets cancelled, so I'll be left with 4 pi square r plus h upon gm, or rather 4 pi square g. Yeah, that's better. यहीं से आपको मिल जाए. So this is time period. You have to show that it's a, yeah, time period is directly proportional to the cube of radius. ये आपका third law था, that is law of time, okay, law of periods.
आपका केपलर्स लॉ में थर्ड लॉ था, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। सो दैट कैन आल्सो बी प्रूव्ड फ्रॉम हियर। उसके लिए मैं आपको एक और रिलेशन दे रहा हूँ, उसको नोट करें, यहाँ से आपको प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा ना, that's what I was thinking. So this will not get cancelled, यही पर आएगा, आपको एक और मिलेगा r plus h, ठीक है। So this will be 4 pi square r plus h whole square is r square plus 2 rh plus h square plus r plus h plus multiplied by r plus h into gm। इसको आप फर्दर सिंपलीफाई करके लिखोगे तो यू विल गेट r plus h the whole cube, that is t square equals 4 pi square r plus h the whole cube upon gm। m को ऊपर डालोगे तो m को नीचे से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट दैट विल मेक इट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। इसी को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे अगर आपने r plus h the whole cube को एक्सपैंड कर दिया तो यू विल गेट r cube term which is directly proportional to t square। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, if h is very very small compared to r, then r plus h the whole cube is equal to r cube। इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ with r cube and that is directly proportional to pi। Okay, now the next derivation is energy of a orbiting satellite। एक सैटेलाइट might it be polar, ठीक है, या वो कोई भी तरह की सैटेलाइट हो, if it is orbiting around the earth, उसके पास एक एनर्जी होगा which is the combination of potential and kinetic energy, है ना। मूव कर रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो एक हाइट पे है, एक ग्रेविटी के आधार पे, इफ विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी वो क्या कर रहा है, वो एक हाइट पे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। दैट इज देयर आर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, और दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस होने के बावजूद वहां पे एक डिस्टेंस है, एंड सिंस देयर इज अ डिस्टेंस देयर इज पोटेंशियल एनर्जी। सो एडिंग दीस टू एनर्जीज, दैट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, आपको उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा which is nothing but the energy of the orbiting satellite, ठीक है। तो उसको अभी हम देखते हैं। So energy of the orbiting satellite is given by, यहाँ पे आपको इक्वेट करके दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, that is kinetic energy and potential energy, and find the total energy, ठीक है। So energy kinetic is given by half m v naught square, which is half m v naught square को आप कैसे लिख सकते हो, that is g m upon r, ऐसे नहीं आएगा ना, gm upon r plus h whole square, yes, there will be gm upon r plus h, m और m मिलके आपको m square देंगे, so I'll be 1/2 gm square upon r plus h, or rather 2 into r plus h, that is my energy kinetic। Energy potential is given by gmm upon r, that is your पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और उसका सिंप्लीफिकेशन आप कैसे करोगे, r plus h लिख लो, that is enough, so g m m upon r plus h। now adding these two, that is energy total equals energy kinetic plus energy potential, that is equal to g m square upon 2 r plus h plus minus, that is minus, plus into minus is minus, gmm upon r plus h। r plus h को आप एलसीएम में ले सकते हो, you can either do that, आप ऐसे भी समझ लो इसको, this is यहाँ पे gm square upon r plus h है, यहाँ पर भी gm square upon r plus h है, gm ठीक है। So the thing is, if I consider this gm m upon r plus h is equal to k, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, half of k minus k, anything, suppose half of 1 minus 1, that is nothing but half minus 1, that is given by minus half, है ना। half से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको minus of half मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज यू सी दिस इज अ होल क्वांटिटी, ये वो होल क्वांटिटी का एक हाफ फ्रैक्शन है। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हियर यू गोइंग टू गेट, सो द नेट एनर्जी टोटल इज इक्वल टू माइनस ऑफ, बिकॉज आप हाफ में से वन को ले रहे हो, सो इट इज माइनस ऑफ द हाफ क्वांटिटी, दैट इज
GMM upon R plus H twice. That is my total energy of an orbiting satellite. So with this we complete gravitation chapter. यहाँ पर हमने gravitation का सभी derivations करा हुआ है. What are the main ones? We have covered them. ठीक है. इसके बाद हम NLM Newton's laws of motion उसको start करेंगे. Thank you.